हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट की। एंड आई एम श्योर कि जितने भी व्यूअर्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ ने इस प्लांट का नाम सुना होगा। इस प्लांट का नाम है कालमेघ। यस, दिस प्लांट इज कालमेघ। कालमेघ का बोटेनिकल नेम है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा और ये अकेंथिएसियाई फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आयुर्वेद में प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है कुल के बेसिस पे। सो दिस प्लांट बिलोंग्स टू दी वासाकुला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कालमेघ। तो अगर बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आता है प्लांट का हाइट। तो प्लांट का हाइट अगर हम देख सकते हैं, ये प्लांट दो छोटा है। एक आपका कालमेघ का जो प्लांट है, इट अटेन्स अ हाइट ऑफ अराउंड 30 to 110 सेंटीमीटर्स ऑन एन एवरेज। इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब अगर हम इसकी लीव्स की बात करें तो इसकी लीव्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्लांट की लीव्स जो है वो ग्लैब्रस हैं। ग्लैब्रस का मतलब है दे आर हैविंग स्मूथ सरफेस। और जो लीव्स हैं वो पिनेट हैं। पिनेट का मतलब होता है कि एक स्टेम पे ये ऑपोजिट साइड में जो है वो लीव्स लगी हैं, दैट इज पिनेट। द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द फ्लावर। तो इस प्लांट का फ्लावर जो है वो जनरली व्हाइटिश इन कलर होता है और उसके ऊपर रोज पर्पलिश कलर के स्पॉट्स रहते हैं। प्लांट्स के सीड्स जनरली न्यूमरस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कालमेघ के सीड्स जो हैं वो येलो कलर के हमें देखने में मिलते हैं। Now coming on to the pharmacological properties of this plant. So सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेस्ट के बारे में। द रसा, कालमेघ का रस is thick. Thick means it is having bitter taste. Now the गुण are basically the inherent properties of a plant. So this plant is having लघु and रूक्ष गुण, which means it is light to digest and is having drying properties. The virya or potency of this plant is hot, and vipak of kalamegh, that is the post-digestive action, is katu. The next thing is the pharmacological action or activities of this plant. So first and foremost, kalamegh is having yakrit uttejak property, which means कि liver function enhance करने की property कालमेघ में है। Secondly, कालमेघ इज हैविंग पित्त सारक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि एक्सेसिव पित्त दोष जो है उसको शरीर से निकालने में कालमेघ प्लांट हेल्प करता है। थर्डली, इट इज हैविंग कृमि घन प्रॉपर्टी। कृमि घन का मतलब है इट हेल्प्स विद वॉर्म इन्फेस्टेशंस। द नेक्स्ट इज इट इज हैविंग स्वेद जनन प्रॉपर्टी। स्वेद जनन मींस इट हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ स्वेटिंग। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये एज एन एंटीपायरेटिक भी बिहेव करता है। एंटीपायरेटिक मीन्स कि कालमेघ इज हैविंग द पोटेंसी टू हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ फीवर्स। एंड द लास्ट वन इज कालमेघ इज कटु पौष्टिक। कटु पौष्टिक मीन्स दो द टेस्ट ऑफ दिस प्लांट इज बिटर, स्टिल कालमेघ इज वेरी नरिशिंग। अब हम बात करेंगे कालमेघ का इफेक्ट वेरियस दोषों पे, वात पित्त कफ पर। तो पित्त और कफ को कालमेघ पैसिफाई करता है एंड वात दोष को बैलेंस करता है। Now the next thing we are going to discuss about कालमेघ is the chemical constitution of this plant. So this plant is having chemical constituents like flavonoids, xanthones, polyphenols and andrographolites. The main bioactive compound of kalamegh, which is responsible for its maximum of therapeutic property, is andrographolites. This chemical constituent of kalamegh is responsible for its entire therapeutic actions, जैसे कि कालमेघ का एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है, हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोएक्टिव कंपाउंड which is called as andrographolites. In addition, जो polyphenols हैं, flavonoids हैं, they also play a good role and because of their presence, the plant is potent enough to act as an antibacterial and antipyretic. So this is all about this wonderful plant कालमेघ. कालमेघ प्लैनेट आयुर्वेदा की बहुत सारी फॉर्मुलेशन में एज एन इंग्रेडिएंट है
और मैक्सिमम फॉर्मुलेशंस जो हैं दे आर फॉर लिवर कंडीशंस। लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, या सिंपली लिवर को स्टिमुलेट करने के लिए कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें आपको डेफिनेटली कालमेग की प्रेजेंस मिलेगी ही मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट कालमेग। I hope you guys have found this video knowledgeable. Don't forget to like, share and comment. Thank you for watching. Welcome to Planet Ayurveda. Yakrit Klihantak Churna is a perfect Ayurvedic supplement that takes care of all your liver issues. It's an all-rounder health product for every age group. क्योंकि जब liver fits, the life super hits. Log on to www.planetayurveda.com and order a full range of Ayurvedic medicines and herbal supplements. Delivered worldwide. अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ। इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक और पाएं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda